हेट करने वाले बहुत बेबी थोड़ा प्यार दे, बुरी नज़र से देखे सब नज़र तू मेरी उतार दे, तू और मैं बड़े लगते अच्छे कहंदे मेरे नाल दे, हुण चकी मैं कलम फिर करना कमाल कमा अकल नू अज मेरा दूरों सलाम आराम ता मेरे लिए हैगा हराम, सोना है जल्दी और उठना भी जल्दी, कहती जो करना है कर लो तुम जल्दी, रॉबी है सैवेज जो भरी है टंकी, 100 लगे ओदे पीछे लगा लू हल्दी, स्माइल इन्फेक्शियस कुड़ी बड़ी प्रेशियस मुझसे भी ज्यादा एम्बिशियस, पाके उसको नहीं मुझे खोना, खड़ी है बोली खरा वो सोना। अपने से ज्यादा एम्बिशियस लड़कियां आजकल के लड़कों को डाइजेस्ट होती हैं। You know what, like that's the beauty of hip hop. People see it as like just कि filler rap है बीच में, but if you actually listen to the lyrics, तो rappers आपको यही educate करते हैं. Like I would like to quote this lyric by Big Sean where he says, "My new girls on Glee and shit, probably making more money than me and shit." So you know, we have always grown up like that कि अगर आपकी बंदी आपसे ज़्यादा भी कमा रही है या आपसे ज़्यादा ambitious है, that's a good thing. What is the maximum time duration एक relationship चल सकता है? 2 दिन 3 दिन ये maximum है? 6 घंटे भी चला मेरा तो. Really? Yeah. 6 घंटे? I met this girl in a nightclub and we got along so well. And she was a bit tipsy, I was a bit tipsy, and she ended up saying, you know, we spent like 4 or 5 hours together and she ended up saying, I think I'm in love with you and stuff like that. So we shook hands and we were like, okay, we'll make this work. We'll talk about this tomorrow in the morning. कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम रैप करना सीख सकते हैं. Do you think that it's genuinely a gift, it's genuinely an art, you cannot learn? I think anybody can be a rapper. I think everybody is a rapper. Because you know what? It's rhythm and poetry. Rhythm में हम कितनी चीजें बोलते भी हैं. I'll see you in an hour. Let me take a shower. कितने लोग ऐसे बोलते हैं ना? So I think if you do that on a beat with some emotion, it is rap. Everybody is a rapper. They just don't know it. Red Indies Shuffle Chat. सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर मैं हूं आरजे दीक्षा एंड आई वांट टू टेल यू कि आज रेड एफएम के स्टूडियोज में जो इंडिया आर्टिस्ट आए हैं ना, इनका एक नया गाना आया है दैट्स कॉल्ड बेजा बेजा. रॉब सी इन द रेड एफएम स्टूडियोज गाइस एंड आई वांट टू आस्क यू, क्या आप इस बात से एग्री करते हो कि आज भी लड़कियां जो हैं वो सरकारी नौकरी वाले लड़के जो हैं वो ढूंढ रही हैं और उससे इंप्रेस हो जाती है? I think on the contrary, लड़कियों को बड़ा boring concept लगता है like you know सरकारी job वाला, because they come with a set mindset कि you know ऐसा होगा या ऐसा होगा या boring होगा etc etc. मतलब I think I have not found somebody, मतलब because मैं एक artist भी हूँ तो मेरा थोड़ा you know मुझे भी थोड़ा आर्टिस्टिक लोग पसंद हैं. राइट. तो दिस इज लाइक दिस इज जस्ट लाइक माय डे हसल एंड वो डे हसल is like I'm getting to learn like a lot. Of course, for the bread and butter, you're doing something in your life, but your passion is music, है ना? And for that reason, of course, we're talking about Beja Beja today, yes. and all the other songs जो आपकी EP में आए हैं. So please tell us about that. So basically, मैं एक album release कर रहा हूँ on the 25th of August. It's called Underdogs, and उसमें 12 tracks हैं. 3 पुराने हैं, 9 एकदम fresh हैं. And we called it Underdogs because Indian rap community में क्या रहता है कि people, I mean, most of the times, I won't say you look down upon, but then they are always trying to say कि यार इसका ये गाना better था, या ये flow इसने यहाँ से उठाया, या ये melody इसने यहाँ से उठाई है, etc etc. There's a lot of scrutiny basically. So I've been feeling like the underdog for a very long period of time, and that's the thought process that I wanted to go ahead with. You know, this album is probably my best lyrical work till date. And it's coming from the mindset of an underdog who's really hungry. So it's with my long-time collaborator friend Harry Spark, जो कनाडा रहता है. तो ये उसने वहाँ से beats भेजी, मैं चंडीगढ़ में था, तो सारी एल्बम ऐसे ही बनी है फोन कॉल्स पे. अच्छा. Yeah. Oh, lovely. To be honest. Very nice. But also गाने में, especially अगर इस गाने की मैं बात करूँ, बेजा बेजा, बहुत सारी प्यार की बातें भी हुई हैं इस गाने में. Yes. है ना? And अगर मैं आपका point of view जानूँ, are you an old school kind of a soul या फिर वो Gen Z वाला आप ज़्यादा relate कर पाते हो? नहीं, I'm pretty old school because like I think that old school is cool. I think
Gen Z वाला भी ठीक है, but I think I've tried that also, but that does not last very long. Old school is So- not boring, है? Yeah. लोगों को लगता है old school is very boring, but it's not. No, I think just like anything else, people will go eventually back to old school. Yeah. जैसे धीरे-धीरे पुरानी चीजें ट्रेंड में आ रही हैं. Like this will also happen. Right. Also, I want to ask you because आजकल जितने भी Gen Zs हैं, they all are on dating apps. है ना? Yeah. और डेटिंग ऐप का एक्सपीरियंस कोई ऐसा रहा कोई वियर्ड एक्सपीरियंस दैट यू हैव हैड यू फील कि यार ये तो बहुत ही क्रेजी था लाइक आई हैव नेवर बीन ऑन अ डेटिंग ऐप मैंने एक बार डाउनलोड करी और मैंने देखा कि यार ये तो आसपास वाले लड़के दिखा रहा है भाई डिलीट कर दिया मैंने ऐप तो ऐसा कोई वियर्ड एक्सपीरियंस कभी आपका रहा हो डेटिंग ऐप पे मेरा रहा है लास्ट ईयर रहा है एक बहुत ही वियर्ड एक्सपीरियंस वियर्ड तो नहीं कहूँगा मतलब आई कुड सी इट कमिंग बट देन आई डिडंट सी इट कमिंग आल्सो आई वाज डेटिंग दिस गर्ल who told me after the first 4-5 dates that she's bisexual. Okay. So तब तक थोड़ी attraction हो चुकी थी मुझे तो I being the kind of person I am I was like I'm okay with it like as long as it's a girl like I don't have any issues with it. So she was like no but I have an issue with it because I like her. Okay. I am prioritizing her over you. So that happened to me for the first time but then I wasn't really sad about it. मतलब मैंने अपने दोस्तों को बताया we had a nice laugh and I still talk to her sometimes. So this happens a lot. काफी fraud होते हैं हाँ मतलब this was not a fraud but a lot of frauds do happen on dating apps. Yeah, वो भी कुछ हुआ है but अभी मैं वो नहीं बताऊंगा. अच्छा मैं समझ गई हूँ कि कहाँ तक हुआ होगा हाँ बट गाने में एम्बिशियस लड़कियों की भी हमने बात करी है सो अपने से ज्यादा एम्बिशियस लड़कियां आजकल के लड़कों को डाइजेस्ट होती हैं लाइक दिस इज समथिंग which can be a turn off for a lot of guys क्या ये तो मुझसे भी ज्यादा ambitious है No, I think that's the best thing ever because on a day-to-day basis you're getting inspiration from your partner. आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है आपकी पार्टनर ही आपको मोटिवेट कर रही है and you know what like that's the beauty of hip hop people see it as like just कि filler rap है बीच में but if you actually listen to the lyrics तो rappers आपको यही educate करते हैं like I would like to quote this lyric by Big Sean where he says my new girl's on Glee and shit probably making more money than me and shit so we have always grown up like that कि अगर आपकी बंदी आपसे ज़्यादा भी कमा रही है या आपसे ज़्यादा ambitious है that's a good thing I think. But also Underdogs में आपने अपने Instagram पे mention करा है there are going to be a lot of real confessions. Yeah. है ना तो वो confessions क्या होने वाले हैं? Is it going to be about you, about something specific in life? Yeah, so on the first track itself, I'm talking about my journey. Like हम सेक्टर 23 चंडीगढ़ में रहते थे, like family of 5. तो मेरी मम्मी को सरकारी घर मिला हुआ था, and वो बहुत बड़ा नहीं था. तो I am like being very transparent on this album. This is where I come from. So the first track itself, it makes me very nostalgic. And when I was writing it, I think I wrote the first intro track in 10-15 minutes because the beat was such. And फिर एक track है 5 AM in Panchkula. वो एक्चुअली मैंने सुबह 4:30 बजे ही लिखा था. I couldn't sleep the entire night. I was high on caffeine. So I wrote that song. उसमें I am just being the naughty guy that I am. And likewise, like all the tracks, they are like that. Okay. और आजकल के टाइम में वैसे अगर मैं आपसे पूछूं, what is the maximum time duration एक relationship चल सकता है? 2 दिन, 3 दिन, 6 maximum है? 6 घंटे भी चला मेरा तो. Really? Yeah. 6 घंटे? I met this girl in a nightclub and we got along so well. And she was a bit tipsy, I was a bit tipsy, and she ended up saying, we spent like 4-5 hours together and she ended up saying, I think I'm in love with you and stuff like that. So we shook hands and we were like, okay, we'll make this work. We'll talk about this tomorrow in the morning. And वो morning कभी आई नहीं, like the next day I was ghosted, so. Oh my God. Yeah. And do you feel आजकल के जो couples हैं, they are very, very fake on social media? Like just for the sake of it, because you and I look together, so maybe we should be together. Yeah, you're right. And I think sometimes they go the extra mile just to, portray that image, our life is so great. But on the contrary, sometimes it's not that great. एक बड़ा funny incident है. So I went to Elante Mall और मैंने वहाँ देखा कि एक लड़का, there was a couple, तो लड़की के लेसेस खुल गए, ठीक है? तो उसने पैर रखा ऊपर चेयर पे और उसने बोला प्लीज बेबी मेरे लेसेस बांध दो और वो लेसेस बांध रहा है उसके, है ना? ही इज डूइंग इट एंड शी इज मेकिंग अ वीडियो. She is literally making a video of it. And when the guy turned and saw कि अभी वीडियो बना रही है वो,
तो वो और ज्यादा टाइम लेने लगा लेसेस बांधने में कि हाँ चल तू बना ले, ओके जस्ट डू इट. सो आई थिंक a lot of this stuff is happening just for social media. मैं भी करूँगा अगली बार. है ना? Thank you. Good idea ना? मुझे भी ऐसा लगा, मैंने कहा यार very nice, बहुत ही बढ़िया. जहाँ ब्राउनी पॉइंट्स मिले ले लो. गर्लफ्रेंड से तो ले लो. बट वैसे अगर जो लोग रैप को बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड इट, अंडरडॉग का क्या मतलब है और अंडरडॉग रैपिंग का क्या मतलब है? अंडरडॉग में ये तो बहुत सोफिस्टिकेटेड टर्म है. अंडरडॉग मींस निठल्ला बेसिकली. इंडियन रैप कम्युनिटी में निठल्ला ये कुछ नहीं कर सकता. ये एल्बम तो छोड़ो, ये कोई ढंग का फ्लो ही नहीं लिख सकता. ये कोई ढंग की बार इज लाइक अ लिरिकल रेफरेंस कि कुछ भी विटी नहीं बोल सकता. इससे कुछ एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते. एंड व्हेन द अनएक्सपेक्टेड हैपेंस, व्हेन इट कम्स फ्रॉम पीपल जो निठल्ले आपको लगते हैं, देन इट हिट्स यू हार्डर. लाइक अ प्राइम एग्जांपल ऑफ दैट इज एमिनेम. Right. Hip hop is black music and he's a white rapper. So when he came out with his debut album, he had so much shock value that people were like, who's this guy? और वो आज तक उसकी जर्नी 23-24 साल से बरकरार है. So I think people need to like, especially इससे पहले जितनी मेरी albums आई हैं, I think that was a warm up. And this is the first time where we have actually followed a theme and हमने stick करा उस theme को. Right. And who is your favorite rapper? My favorite rapper is 50 Cent. Yes, I grew up listening to a lot of rap, and but 50 Cent not just because of his rap, because of his personality, and just hip hop is knowledge at the end of the day, and I like to like grasp knowledge. So एक चीज होती है ear hustling. So all these rappers they talk about their life, and if you closely analyze that, तो आपकी life बहुत better हो सकती है depending on what you want to grasp from XYZ rapper. Right. So I think 50 Cent is like the perfect role model. He's like a sober guy, and he works out, and he's got a great voice, and he makes great music. And what about rapping in Punjab? What do you think? अभी क्या सीन है? मतलब अगर हम वैसे पंजाबी म्यूजिक की बात करें, it is turning out to be global. मतलब आज अगर हम top 4 songs की बात करें, all of them are Punjabi. Yeah. है ना? So what about rappers in Punjab? I am totally loving it because slowly जो पूरा soundscape है, पूरा pattern ही hip hop पे आ गया. Like I was listening to Guru Randhawa's latest song. It's on a trap beat, which I never thought कि होगा. Then AP Dillon is there. Sidhu Moosewala, rest in peace. He was pioneer. Right. Karan Aujla. And there's so many guys who can be considered as rappers only because जिस टेम्पो पे वो गाने बना रहे हैं, जिस टेम्पो पे वो रैप कर रहे हैं, मतलब या जो गा भी रहे हैं, that is more or less rap only. Right. So any of your few favorite lines, or maybe the rap part that you would want to just tell the people out there जो भी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए, from the whole album कौन सा favorite part है? Okay, so there is this song that I made called Beja Beja, and उसमें एक वर्स मेरा है where I say हेट करने वाले बहुत, बेबी थोड़ा प्यार दे, बुरी नज़र से देखे सब, नज़र तू मेरी उतार दे, प्यार मुझे उधार दे, सिर पे है बोझ उतार दे, तू और मैं बड़े लगते अच्छे, कहंदे मेरे नाल दे, हुण चकी मैं कलम फिर करना कमाल कमा अकल नू अज मेरा दूरों सलाम आराम ता मेरे लिए हैगा हराम, वेरी मैनू देखना वे चांदे ना काम, सीधा सा बंदा कॉल मी अक्षय, ड्रॉ करो खुद बेबी लाइफ के नक्शे, फ्लो मेरा इंडेस ऑल अबाउट द बिजनेस, माइक पे आके निकालता मैं खुन्नस, सोना है जल्दी और उठना भी जल्दी, कहती जो करना है कर लो तुम जल्दी, रॉबी है सैवेज जो भरी है टंकी, 100 लगे ओदे पे लवा लू हल्दी, स्माइल इन्फेक्शियस कुड़ी बड़ी प्रेशियस, मुझसे भी ज्यादा एम्बिशियस, पाके उसको नहीं मुझे खोना, खड़ी है बोली खरा वो सोना. क्या बात है, बहुत ही बढ़िया यार, वेरी नाइस. ऑल्सो रॉब, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम रैप करना सीख सकते हैं. डू यू थिंक दैट it's genuinely a gift, it's genuinely an art, you cannot learn to write, learn to become a rapper, like you cannot learn to become a singer ना, आवाज अच्छी नहीं है तो सिंगर नहीं बन सकते. So do you also feel कि सेम रैपिंग में भी ऐसा ही सीन है? नहीं है. I think anybody can be a rapper. I think everybody is a rapper because you know what, it's rhythm and poetry. Rhythm में हम कितनी चीजें बोलते भी हैं. I'll see you in an hour. I'll see you in an hour. Let me take a shower. कितने लोग ऐसे बोलते हैं ना? Like कितनी चीजें हम ऐसे flow में बोल जाते हैं. So I think if you do that on a beat with some emotion, it is rap. And I had a conversation with a very dear friend of mine about this way back. Everybody is a rapper. They just don't know it. Right. अगर मैं आपको भी अभी 8 लाइनें लिख के दूंगा, आप गा लोगे. बीट पे आप गा लोगे.
पर मतलब रैप कर लोगे, बट अगर मैं आपको बोलूंगा इसको ए शार्प माइनर में गा दो तो आपके सिंगिंग स्किल्स होने जरूरी हैं। रैप आई थिंक एनीबॉडी कैन डू और आपकी आवाज बन जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बट आई थिंक राइटिंग इज आल्सो समथिंग that's not with everyone. मतलब लिखना तो सच में एक आर्ट ही है, which I feel, है ना? And that you also feel कि हाँ। Yes. This is something that I would like to add. Sometimes ऐसा होता है कि आप लिखने बैठे हो, आपकी राइम स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छी नहीं जा रही हैं, मतलब you don't feel that bounce in your song कि bounce नहीं आ रहा बीट के ऊपर, so you have to make a few adjustments and simple things like your the, then, how, the why, the what, छोटी details like in Hindi and Punjabi, I mean a few words here and there and you get that bounce. Right. So वो I think आपको सुन के ही आ सकता है, जितना आप रैप सुनोगे utna I think you'll be able to like master it effectively. Right. And I was checking out your Instagram and you also worked with Noobster. Yes. है ना? I have, How yeah. he is like something else, है ना? मतलब he's so young and is creating such great music. How is it working with him? It's always amazing, and he is Manch Paji's son, and Manch Paji is like Manch music. Yeah, he's like an elder brother to me. So we actually made this song called Pindo Aaye, which was later renamed Village Boys. And हमने वो एक normal सी beat पे पहले track बनाया था. And when I showed it to Manch Paji, he was like, "Let Noobster produce it." So he produced it in 2 days. And when they sent me that version, I was like, this is way harder than what we made. So let's go ahead with this. Yeah. And Noopy he's crazy. I mean, he's worked with Tory Lanez also. So he's amazing. Right. And any of the collabs that you would want to do, like in coming up days, or maybe you dream of doing a collab with someone? Yeah, there are many. I really want to work with Karan Aujla. I think he's amazing. He's an amazing songwriter, and I want to work. This is very far-fetched, but I am manifesting it. Like I have always been a fan of A.R. Rahman ever since growing up, because उनके कितने सारे soundtracks में hip hop beats रहती हैं, and he used to work with this rapper called Blaze. So even he made this song called Humdam Suniyo Re for Sathiya. तो बचपन में मेरे को उसका पूरा रैप याद होता था. Like छोटा सा आता शुरू में. प्लीज सुनाओ ना थोड़ा सा. अभी नहीं याद मुझे, but बचपन में like that movie came out in 2002, तो मैंने वो पूरा याद कर रखा था उस टाइम. हाँ. But it was such a beautiful track. बहुत ही जबरदस्त है ना? And if you analyze it, it's like on a hip hop beat. The drum kit that they've used, the bass lines and everything, that's all hip hop. तो वहीं से ही थोड़ा कीड़ा जागना शुरू हुआ था कि हाँ ये इंडिया में भी होता है. Right. Yeah. And what about your musical journey? How did it start? And yeah, this is an interesting thing, because I was a part of this community on Orkut called Insignia. I am sure 90% hip hop lovers don't know about this, but उस टाइम पे एक community होती थी Orkut पे. हाँ. तो उस पे हम text battle करते थे. Like मैंने अगर आपको diss करा है तो मैं text में कर रहा हूँ. Everybody can read, and then the guy would take 5-6 hours and then come back with his text. Really? Yeah. हम तो आशिकी कर रहे थे कंप्यूटर में से वहाँ जा, वो क्या होता था, वो कैफेज में जाते थे और ऑर्कुट पे बातें करते थे, आशिकी कर रहे थे यार. हमने तो कुछ नहीं किया. वो अलग टैब में वो भी करता था मैं, ये भी करता था. तो उसमें किसी के पास पैसे नहीं होते थे रिकॉर्ड करने के. Nobody had a microphone. So I remember साउथ का एक आर्टिस्ट था ब्रदर वी. We made a song in 2011 called Fresh. It's still out on YouTube. And I think he was the first one who actually dissed somebody using a microphone. Okay. Yeah, and it was a crazy English wala rap, and हम तब उस सारे English में rap करते थे. And it's unbelievable how the scene has evolved so much. Like brands want to work with rappers. Movie बन चुकी है. Brother, we also did a song with Raftaar, na? Yeah. Very nice song. नाचने का शौक. बहुत ही जबरदस्त था. मुझे उनका रैप सच में बहुत अच्छा लगा था उसके अंदर. I really liked it. That was a really nice song. Yeah. Also, any message to all the independent artists out there who will be listening to you, watching this video? Yeah, सब independent artists को मैं एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा. Like I meet so many independent artists who feel very bogged down कि यार हम ये नहीं कर सकते या ये नहीं कर सकते. Like I personally tell them कि if you actually put your mind to something तो आप कर सकते हो. When I started rapping, I was in school. I didn't have money, pocket money पे survive करते थे. School से college में आए, college से फिर job करनी शुरू करी. तो अब तो ऐसे stage पे हैं कि चलो
you have the money. All you need is the time. So just enjoy the journey. There is no such thing as struggle in a music line, I feel, because जितना आप उसको enjoy करोगे, you never know when the tables can turn. So just stay positive, listen to more and more music, take inspiration from people, and just keep killing it. Thank you. And any other rap that you would want to, just for the video, for radio? कोई भी ऐसा आपका favorite rap that you would want to tell? From the album? From the album. उसकी ब्राउन स्किन, वो लगती थिक शेक, ओदी निकी निकी गला, और मैं बना ड्रेक. When I hit it तो वो बन जाती deep in, कहती इतना नहीं सह सकती हूँ knee pain. But I'm a savage just like 21, उसका number one, get to know me baby. One on one, उसके phone और नखरे दोनों नहीं उठाता, पर होती जब sad उसे बाहों में सुलाता. हाय क्या बात है यार, very nice, lovely, बहुत ही बढ़िया. Thank you so much for being on Red Indies Shuffle. Red Indies Shuffle. Shuffle Chat. 93.5 Red FM. बजाते रहो.